this item. नैनों में बंधन है, जीवन ने लगाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। सब दरवाजे कर लो बंद. Let me check if my stream is working fine. Am I audible? Hello, am I audible? Okay, so we are live. Ramaya Vasavaya, Ramaya Vasavaya, Ramaya Vasavaya, Ramaya Vasavaya. 841 is the problem number, so I'll have to this today's topic. So it's this question 841 and not this. टेस्ट किस कहाँ से आया? कॉपी पेस्ट. Eight 41 keys, and then these two questions will do for sure. Okay, these two I'll improve the handwriting later. In this one now we'll connect provisions. We say this is connected. Consider this 0, 1 and 2. So this connected, and then pass this.
I'll send this here, and then DFS will do this DFS will do here. So for internal, we'll iterate on internals, and then I less than 3, for example, here. And then what I'll have to pass. सब दरवाजे कर लो बंद. This is neighbor, and if is visited for this neighbor, if not visited and it's connected, for it's connected for what we have to use. I hope my audio is audible. Okay, hope my audio is audible. I'm writing this on the notepad because pen paper, because nobody was there since I just started with the stream. I just solved this question before the stream. It's almost It was almost the same. I solved it in a flow. I didn't realize that I didn't start the stream, so I finished it, and it was like room and key. You have to enter each and every room. So this is how I solved it right now. I hope my audio is audible. सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए जो. पैरों में बंधन पायलों में चाले शो. I also got this extension. Arya Singh, hello bro. How are you? बहुत पोल्यूशन है यार इंडिया में. बैठे बैठे धूल. This extension I got, ये मस्त है. I can write it anywhere. Oh bro, you go here. Hey, you go here. Take this. Yeah. This is nice. But Control Z doesn't work. Welcome back. Welcome back to you bro. How are you? कुछ तुम बोल रहे थे. You will also start. तुमने start किया? This is nice. Uh, I'm Aryan by the way. हाँ हाँ मैं नाम दिख रहा है ना आर्यन सिंह. Yes, I can see your name bro. अरे मैंने ऑफ स्ट्रीम ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया. मतलब आई डिडंट रियलाइज दैट आई एम ऑफ स्ट्रीम. I thought I clicked start streaming in the OBS and I solved this question. So it worked though. Yes, I am doing sorting right now. Yes, nice. I'll be back on sorting maybe after this graph. मेरे को फिर से चालू करने हैं सारे concept. From the concepts I started on doing this stream since the day one. I'm starting from the basic concept sorting and all. But बीच बीच में कुछ कुछ मिस हो गया मेरा, like backtracking, recursion, some forms of sortings I missed because जो सर के ऊपर से जा रहा था I just skipped and moved ahead. जो अच्छा लगा वो किया, but in the next iteration
I'll do all the missed topics. So this is working, and this is working quite nice, I guess. Yeah, 100%. You need to brush up, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah, we need to brush up. Yeah, that day we were solving one question. Uh, wait. एक star center of the graph something problem था ना. Today when I was working on one of the PRs in office, I realized why I was doing this many things. Okay, so I realized we don't even have to do a complete graph or a, yeah, we are learning graph. That's why we chose this approach. If I go to this topic list, it also says graph theory, mid-level weekly contest. It doesn't specifically says that we should do it by BFS. So it is not the appropriate. See, if let me grab the pen over here. रिकर्जन इज इंटरेस्टिंग. हाँ यार, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं बोर हो गया था ना. रिकर्जन में पता नहीं वो क्लिक नहीं कर रहा था मेरे को. रिकर्जन was boring a little bit, but after a while, like doing such kind of problems graphs, maybe we have used recursion so much so that I have understood. ठीक है, in this you still here, or I'll not just explain to. I'll try this because we don't, for example, if there are four different nodes connected to one different node, one single node, then in this case, why we are doing these many things, I can just check this two, 1 and 2, and let's see कि ये कहाँ connected है. I'm feeling this like a cheating, but मेरे को लगा कि आज तो on stream में I'll try this thing. So I'll just need to check these two strings, no, अगर edges कि 4 is connected to 2, 2 is connected to 1, see the common, and 2 is the center. वेट, ये मैं ट्रिकरी थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ. अगर चला तो चला, नहीं तो एनीवेज वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस क्वेश्चन, सो नो इश्यूज इन दैट. योर टैब इज नॉट visible. Is it? Just a second, let me grab this. Thanks for letting me know, bro. या नाउ इट्स विजिबल. नो, मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया. मेरे बाल बहुत उठ रहे. So I was saying कि instead of C मेरे को Control Z करना पड़ेगा. This was the solution that I submitted, and I know we were learning graph. That's why we chose this long way to do it. But when I was doing like submitting a PR today at office, I realized there was similar pattern, like we use 2D array for something. I thought why I'm doing graph here, even using a graph even for this. There are three edges here. Okay, I just have to check two edges and not this edge. Okay, so I'll just check this. 4 is connected to 2. Okay, and in this 2, right now I don't know ki 2 is 4 is centerpiece or 2 is a centerpiece. So for me both of them are centerpiece, so I'll go and check the next stage and see what's the common, if it's a 4 or it's a 2. So it's a 2, so 2 is the center. So I felt like ये गलत हो सकता है, लेकिन we'll go and give it a try. So any that I was saying कि we have anyway submitted this question, so it doesn't matter, it will not cut our marks. So I was thinking कि if like this edges में से this element, edges में से this element is present, or we have to go to second, not the first. We have to go to second, means first edges का 1. So इसका 1 and 0th element means this 2 is present in is अबे यार,
is present in edges का EDGES edges का जीरोथ एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, कुछ भी मतलब जीरोथ एलिमेंट का जीरोथ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट. क्या हूँ भाई, श्री साई. ब्रो व्हाट ब्रो. व्हाट ब्रो, आगे तो बोलो. Your tab is not visible. I read that message. Recursion. Yeah. What bro is present in this? Then return this only. Else return इसका उल्टा. Because everything is connected. So there is no such condition that nothing is connected to nothing. So 1 and 0. Hello bhai motivator. Hello bro. बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यार. श्री से आगे बोलो भाई, उसके आगे क्या. कुछ तो गलत अच्छा ये मैंने लिखा नहीं. So how we can write this, maybe simple equal to this. Equal to this. इसको भी else में लिखना पड़ेगा क्या शायद. Maybe it's a wrong thing. If this element is equal to edges uh, 0 comma 0, that means this element, or edges 0 comma 1 means this element. अगर yes, yeah, it's true, so then in that case return edges 1 comma 0. Else edges 0 comma 1. नथिंग. हेलो भाई, अरे मोटिवेटर भाई हेलो तो बोला. नथिंग तो क्यों, मतलब क्या, क्या हुआ, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं. एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग. आई थॉट इट विल वर्क. मैं फर्स्ट, ये इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट होता है भाई, दीज एजेस वगैरह थिंग्स नॉट अंडरस्टैंडिंग. दीज मैं पहले सॉर्टिंग कर लेता हूँ. हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मेरे को भी कोई कहाँ समझ में आ रहा है इतना. आई एम ऑल्सो ट्राइंग. गर्मी इज लाइक एसी में 1 आवर बैठने के बाद दिमाग दिमाग चल रहा है, फ्रिज से पानी लेने निकलो तो मैटर हो जाता है. नाइस दैट यू हैव एसी. मेरे पास तो ये है गरीब का कूलर, गरीब का एसी भाई. Oh, how can you use these stickers, bro? Arya Singh. Sleepy time to good night. Sleepy time to good night. What? इंटेजेस तो ये आना चाहिए ना इन दोनों में से एक. तो इसमें क्या है, 1 और 2, 5 और 1. ओके आई हैव टेकन लाइक 5.
There is an icon. Okay. How can I use this? Can I use this? Oh, there are options for me. Huh? I didn't even know that. Start a Q&A, start a poll. So, what poll can I ask? Is this stuff boring? Yes, I can have this poll. There you can use YouTube stickers. There is an icon. Acha. Oh, okay, okay. Oh, YouTube icon. Yeah, this is nice. Okay, nice. Let me think. ये मेरे को लगा कि चलना चाहिए क्योंकि सारे अच्छा this element is not connected, no? Okay, just सब दरवाजे कर लो बंद. There are many icons I can use. You can see the poll that I just started, no? I never मेरे को वो याद ही नहीं था कि ये सब options भी है मेरे पास. It's okay. यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 and 2 and 5 and 1. So clearly 1 is the star over here. Okay, so 1 comma 0 is 5. Yeah, I have pen here, so I can write with the pen here. Okay, so I have like 1 comma 0 is 5. Okay, this is 5 and 0 comma 0 is 1, so it will not equate, and then 5 1 comma 0 is again 5 and 0 comma 1 is 2, so it will not here, so the center is this. No, 0 comma 1 कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ ना. अच्छा, it should be 1 comma 1 I guess, not this. 1 comma 0 1 comma 1, it should be 1 comma 1. This should be 1 comma 1. Let's try. Yeah, worked. 100%. Yeah, nice. Nice, nice. Okay, back to the problems that we were doing. पोल का मैं कैसे रिस्पॉन्स दे सकता हूँ? दिस seems sus though. Yes, we can. एक सेकंड में चार्ट कहाँ चला गया? ओके. गुड पोल. Very good evening, Anna. Good evening, Vignesh bro. Anna. Brother, if I have solved to some problem without watching even arrays, is it good for a very or very not? Is it good, bro? Doubt करना छोड़ दो भाई. It's good. Everyone starts at some point. It's good that you solved without any. मेरे को ये help की ज़रूरत पड़ी थी. You didn't, so you are better. You are in better position than me. Two difficult questions in chat. Yeah. I wanna see. Yes, we can. Bro, to some needs to be mallows. अच्छा, in C++ maybe. Oh, it is just in C, right? Yeah. That seems sus though. What seems sus, bro? The smiley or the code? Code is for sure sus, but अगर अगर तुम्हें कहीं पूछा गया तो you can this question ये पूछा गया है ना कहीं पे
कंपनीज ए प्रीमियम फीचर टैग लाउड है मेरे को दिखा। अरे अब पहले तो दिखाता था कौन से कंपनी में पूछा है ये क्वेश्चन। बहन चोद। तो ये स्टार वाला पूछा तो बस ये दो एजेस चेक करना और जो दोनों में से जो कॉमन है वही दे देना। इट्स सिंपल, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कीज़ वाला हो गया है। It is also a nice solution. We have to, I guess, use the same for this find circle like number of provinces wala. Without arrays. No, I was talking about two sum without arrays. Oh, okay. That seems us. Oh, it's in C. That seems us though. Mallows means no. I was talking about two sum without arrays. Mallows. He created some new word. Maybe he's talking about malloc, like assigning memory. You have to assign memory address in C, no? हेलो वर्ल्ड भाई, मैंने 15-20 दिन पहले स्ट्रीम ज्वाइन किया था, तब आप स्टैक कर रहे थे। क्या कंसिस्टेंसी है भाई, आपकी ग्राफ्स पे आ गए। अरे उसके बाद मैंने, थैंक्स फॉर दैट, बट उसके बाद मैंने डीपी भी किया कुछ, और क्या किया, ग्रीडी किया मैंने। आई डिड सम ग्रीडी प्रॉब्लम्स। आई फेल्ड इन दैट। आई सॉल्व सम क्वेश्चंस दो, बट वो इतना अच्छे से नहीं हो पाया मेरे से। सो आई देन मूव टू द ग्राफ एंड देन उसके बाद I'll be again restarting from the problem one which is like sorting and all. जो जो बीच में नहीं आ रहे थे और जो वीक टॉपिक्स थे जो नहीं हो पाया या जो मिस हो गए वो I'll do again. This is nice. Dynamic memory allocation, yes. And Java, yeah exactly, yes. हाँ थोड़ा थोड़ा याद है भाई। C++। ये पोल का रिजल्ट कैसे देखूंगा मैं? एंड पोल करना पड़ेगा मेरे को। एंड पोल नहीं करूंगा मैं तो रिजल्ट ही नहीं दिखेगा। नाइस। इसके लिए आई वॉज थिंकिंग ऑन द सेम basis. Should I explain this how I solved this? I solved just before the stream, so if you if you guys want me to explain, then I can, but I think you guys are smart enough to understand. So in this one I'll just explain the question, what question is saying. So keys and rooms mein there are different rooms starting from 0 to n minus 1. There are total n rooms. So in each room, so there are some keys present in each room. Okay, the keys can be for all the, or any keys. The keys can be from like any of the n rooms. There can be in together or they can be like single key whatever, or maybe empty. And the first, the 0th room is always open, so you can go and open the 0th room. It's like a public room. मेरे को तो आता भी नहीं है, मुझे क्या समझाओगे? समझाना तो वही स्किल हो गया ना भाई, जिसको नहीं आता है उसको ही पता चले। So I'll explain if you guys want. This is the code that I used. I can. So there are rooms. Okay. E baba. There are rooms. So like 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay. ऐसे n rooms है total. Okay. n minus 1 number तक है ये, because we are starting from 0. This is a public room. Maybe this is a boys room, so anybody can enter, but these are all locked rooms. So you have to find the key. So there are some keys present, so maybe keys are present in the form of array. अगर यहाँ पे एक present है तभी I can enter, get this key and enter in this room numbered 1. इसके अंदर अगर 2 है
तो आई कैन गो हियर, चेक की, ओके 2 का की मिल गया, तो विद दिस की आई कैन ओपन दिस. अगर इसमें की ही नहीं है तो आई एम स्टक, आई कैन कांट ओपन द नेक्स्ट रूम. So that means I'll not be able to open all the rooms. So the goal is to reach at the end, open all the rooms in short. So we have to find keys in every room. uh, यार ये इंग्लिश ट्रांसलेट हो रहा है, ये ना मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैसेजेस. नेक्स्ट 2 weeks के अंदर plan is to solve 7-8 more problems including medium ones. Also already created the list of questions to attack. Yeah, nice मोटिवेशन भाई. कॉलेज अगस्त से शुरू होगा, कल लाइव स्ट्रीम करा था. ओके दैट्स नाइस यार, दैट्स नाइस. टू सम सॉल्व करते हुए और उसको 2-3 टाइम्स एक्सप्लेन भी करा है. ओके नाइस. ड्राई रन करने से जल्दी समझ में आ रहा है, ये मैंने नोटिस किया है. कोड की गलतियाँ समझ में आती है, क्योंकि दिमाग तो एनीवेज यूज़ नहीं हो रहा है दिन भर, सब ए आई से ही हो रहा है, कभी तो दिमाग यूज़ कर ले हम. तो दिस इज़ द क्वेश्चन. सो आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन दिस वन. आई व्हाट आई डिड सेम, अपना जो लॉजिक चल रहा है ग्राफ्स में, ग्राफ डीएफएस में, वी नीड अ विजिटेड एरे. दैट ट्रांसलेशन इज नॉट हैपनिंग, इट इज़ रिटन इन इंग्लिश ओनली. नहीं 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 ब्रो, I don't know you guys are able to see that in the chat. Okay, if you guys can see this in the chat, uh, see this, वो दूसरे स्क्रीन पे है ना, तो मेरे को ये दिख रहा है कि आई हैव टू गो एंड होवर ऑन दिस. वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा, दैट ट्रांसलेशन इज नॉट हैपनिंग. इफ यू आर writing in some other language than English, then it's automatically translating. Could you please teach some good habits while coding, just like dry run? मैंने उसके लिए ना पहले 50 क्वेश्चन के लिए आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो, क्योंकि आई हैव आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. and you guys can refer to that video in which I have shared like what the steps, like for the normal people like us, what really works, how should you tackle the first 50 questions and what should be your approach. So जो मेरे को चमका है वो मैंने इस वीडियो में बोला हुआ है. So you can go and write. In this I have explained how to use what to use pen and paper or this, and then how to, बहुत कुछ 2-4 चीज़ें बोली है मैंने, मैं खुद ही भूल गया हूँ. I'm pasting the video link here. You can. ये मैंने किसी और यूट्यूबर ये मैंने किसी और यूट्यूबर को बोलते भी सुना. हाँ यही तो सारी चीज़ें हैं, बस वो अपने को रियलाइजेशन जब होता है तभी अपने को पता चलता है. Am I missing on the chat? Sorry, I have explained to audience by doing dry run. Okay, nice. That's nice. uh, कहाँ था यार मैं, यहाँ यहाँ मूव करने में ना मेरा कंसंट्रेशन हिल जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को. या तो चैट इधर चाहिए मेरे को, राइट साइड में. हाँ ट्रांसलेट हो रही है चैट आजकल. आई हैड सेड एंड हर्ड दैट थिंग टू. वो चीज़ कहीं और भी सुनी थी. हाँ हाँ यस, या आई अंडरस्टूड. Number of people watching the stream is increasing. Yeah, that's, see, if you do anything for like consistent time plus keep the persistence alive, then number is just a ball game that you never have to play. I'm really not concerned like how many people are watching. I have another YouTube channel where I have like 2 lakh plus subscribers, and I have everything set up for that. अगर views and all देखना है तो I'll go and work on that channel for views. hmm, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ.
गाइस प्लीज लाइक कर देना यार स्ट्रीम को ना, स्ट्रीम को लाइक करना, क्योंकि सिमिलर माइंडेड लोग ज्वाइन करेंगे, दैट आई वांट कि आई नीड गुड डिस्कशंस, देयर आर सम गुड पीपल दैट आर कमिंग इन बिटवीन एंड हेल्पिंग व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो हेल्प मेरे को बहुत काम में आ रही है, दैट आई एम फीलिंग. सो यू कैन, or maybe you can ping here. I can ask for flowers, telling it to Coopers. Yeah, thanks for that. uh, तो इसमें क्या किया था देखो, पहले विजिटेड एरे ले रखा है और साइज जितने रूम्स है उतने का बुलियन ले रखा है. पहला रूम हम हमेशा विजिट करेंगे तो उसको विजिटेड ट्रू कर दिया. देन डीएफएस फंक्शन, डीएफएस इज लाइक विल मूव फ्रॉम वन रूम टू सेकंड एंड देन थर्ड फोर्थ ऐसे, बट वी हैव टू चेक इन दिस वन. ओके, दिस आई विल कम नेक्स्ट. अगर विजिटेड में इन दिस विजिटेड एरे बाय डिफॉल्ट, यू नो, इन जावा इफ वी क्रिएट अ boolean array with a given particular size, then all the elements will be false by default. You have to make them true. So that I'm taking that feature as an advantage over here, and I am iterating over this visited boolean array and checking if एक भी उसमें false है, मतलब एक भी room हम visit नहीं कर पा रहे तो return false, else true, because वही चाहिए अपने को. Given an array rooms where rooms I is the set of keys that you can obtain if you visited a room I, return true if you can visit all of them, or false otherwise. So that is what it is. And then in this one I'm taking the current room. Current room is nothing but कहाँ है array, this is the current room. एक मतलब array के अंदर, sorry, list के अंदर जो list है, this is the current room, and इसके अंदर एक room का चाबी है, मतलब the room number 1's चाबी is in here. So I have to just get this चाबी out, found key, and check कि next वाला is visited, मतलब found key किसका है 1. So is this room visited, 1 ये है. So is this room visited? No. If not visited, then only we have to go inside. अगर visit किया है तो अपने को अगले room में जाना है. So this room is not visited, so we'll go in and open this room with the key, and we'll see, oh okay, there is a 2, that means there is another key present for the room number 2. Room number 2 is this. Okay, this is 0, this is 1, this is 2. So we'll mark this room first like true visited, and then again run the same recursion on this one, and it will end when this is empty, like this room is empty. So yeah, then done, and then we submit and keys. and ये मेरे को मज़ा आया है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि समझा है मेरे को बाकी क्वेश्चन. Number of people watching, I read that message. I have realized in the past 1-2 years, one stream या वीडियो डाल देना तो आसान है, या लीड कोड वन प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेंटेन करना वो मुश्किल है, इसलिए लर्न इन पब्लिक हेल्प्स. Yeah, it's a Pareto principle. If you guys know, if you guys follow some principles while working, I have like simulation. एक कोई तो चैनल है वेरिटेसियम का, वेरिटेसियम शायद, I'll show you अगर मेरे को मिलता है उसका तो. There is a simulation how consistency and veritasium simulations. I want to do something in CP competitive programming. कोई भी क्वेश्चन उठा लो और चालू हो जाओ दोस्त. देयर इज सिमुलेशन. तुमने अभी बोला था कि यू आर डूइंग दिस, क्या बोला था तुमने, सॉर्टिंग, एंड नाउ यू आर सेइंग यू हैव टू डू simulation 4 criticality, simulation 5 it is. See, I'll tell you from based on this study. This is a very good study. If you guys can see my screen, अगर तुम लोग
if you can take something good out of this, then it is nice. Okay. I mean, for the future, yeah, for the future you can. I feel I wanna be strong, motherfucker. Okay, that's nice. That's a good feeling. See, I'll tell you guys the value of consistency. You know, ये एक study की गई थी. All the natural things or जो भी we can relate this to like anything in our life. This is specifically started because there are so many fires happen in USA. You know, and consider this as a forest. All the green dots you can see are the nothing but the trees in the forest. So we are like passing the time very fast, so time is forwarded like for example 100 times, and then if I start, then there are trees will automatically grow. There is no resistance as of now. So in the natural habitat, the trees are supposed to grow in numbers like us human beings or any other animal. We tend to have a natural tendency that we grow outgrow in the number, reproduce, and the क्या बोलते हैं उसका अपना पॉपुलेशन बढ़ते जाता है. सिमिलरली इन द जंगल्स द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, but but sometimes you know we fear of lot of things before even starting off, like what if there will be some problem, like resist some kind of resistance. We procrastinate just because of the resistance we get along the way, like through the process. So those resistance, because of those resistance we don't even start, but you know those resistance are the key to proceed and go a long way. There is a lighting, why the back to the example that it was created for. There is a forest, like there are forest, and in the forest there are like fires start because of the lightnings, you know, most of the time lightnings, and then we think that एक बार fire हो जाएगा तो पूरे forest जल जाते हैं, but ऐसा नहीं होता है. So if we can fast forward it to some lightning, we can see, let me increase the strike probability. Steps per frame, let me increase this. See, lightnings are happening but resistance is too low, it is growing. बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है तुम्हारे पास, एंड यू आर ग्रोइंग, यू विल एंड मिजरेबली. So you have to regularly face some problems on the daily basis. So if I do the lightning complete zero, growth पूरा मतलब if you are a rich brat, कोई भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है. Okay, I'll make this speed थोड़ा फास्ट. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइटनिंग जीरो एंड पूरा ग्रोथ है तुम्हारे पास, तो व्हाट विल हैपन, सी, a small problem and everything will erase. This is a lightning, this will erase the forest like this. So if you can understand, take good philosophy, but this is very normal distribution study that they have done. It is very nice. बोर हो गया शायद, yes, that's why I kept the option yes, too boring. I have not anything for now. Yeah. Arya Singh, what's your code forces or lead code user? Yeah, guys, do share with me as well. Na? I have subscriber profiles that I can go and see in between. There is this best profile, good profile I have uh, of this guy श्री साई. उसका मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ है. 282. He was on 267 yesterday. How many he submitted? 5 submissions. June 8. Generate binary strings without adjacent zone. He is on the next level, bro. 282 means he is like in the race of Amazon. Amazon interviewers. बहुत डीप है, अगर तुम लोग समझ पाए तो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरी फकिंग थिंग इन द वर्ल्ड. कुछ भी ले लो तुम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही सब आता है. एनी नेचुरल ऑर्डर इज कम्स अंडर नेचुरल
नॉन नेचुरल, ह्यूमन क्रिएटेड, सब कुछ कम्स अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इफ यू गाइज आर इन द कॉलेज, मैथ्स में तुम सीखोगे मे बी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 3 में कि प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एवरीथिंग. ओके, ये क्वेश्चन भी करना है. आई जस्ट फॉरगॉट कि ये क्वेश्चन भी करना है अपने को. मैंने नोटबुक में किया था कुछ. लेट मी ट्राई दिस what I have written in the notebook. uh, Similarly, this visited array we have taken, and we'll do visited 0 as true. Okay, because the first city we will travel for sure. So that's deep, not done anything. Who gave that philosophy? अरे इट्स बहुत सारे बुक्स में वगैरह लिखा होता है ना. सेम ही चीज़ें लिखी हुई रहती है. आई हैव रीड क्वाइट फ्यू सेल्फ हेल्प बुक्स नो. ऑलमोस्ट सारे किताबों में कुछ ना कुछ सिमिलर ही मिल जाता है. ऐसी ही है. परेटो प्रिंसिपल ही नाम है मेरे ख्याल से उसका. This is widely used in industries. When I was in mechanical, in supply chain, supply chain में भी कोई भी कंपनी में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, there will be always 20% workers contributing to the 80% of the productivity, 20% of the developers contributing to the 80% of the productivity, 20% of the features of any, for example, Microsoft Excel, 20% of the features contributing to the 80% of the total overall use case. 20% of the world companies have like 80% of the world का पैसा. uh, could have done like 60 questions but was ideal not doing anything. Aryan bhai, are you talking about LeetCode problems? Yeah, in LeetCode. भाई लोग yes to boring पे क्लिक कर रहे हैं. अच्छा 25%. ओके, दिस इज नाइस. 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं. अरे ऐसे तो भाई डोंट डोंट रिग्रेट अबाउट द पास्ट ब्रो. नहीं हुआ छुट्टियां एंजॉय करने के लिए भी होती है. लाइफ बस पढ़ाई और ये सब करने के लिए थोड़ी है. बाकी बकचोदी भी तो करनी है लाइफ में. आई लेस दैन इज कनेक्टेड डॉट लेंथ. मैंने नोटबुक में लिखा है. मतलब नोटबुक में जो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सकेली ड्रॉ में, ये चल नहीं रहा था. पता नहीं बकचोदी कर रहा था तो मैंने नोटबुक में रफ ये किया है. तो दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू. इफ यू आर कंसर्न, आई एम नॉट सीइंग एनी सॉल्यूशन. आई प्लस प्लस यहाँ पे एक कंसर्न है कि दिस आर 1 2 and 3 बट दी indexes are 0 1 and 2. There is no 3 in that case. You guys can tag each other, no? Or what? Yeah, in LeetCode. Yeah, true. Have you read? Oh, bapre. I'm not able to read the word that you have texted, bro. Have you read Friendrich Nietzsche philosophy? आर्यन भाई कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट. आई हैव फिनिश फर्स्ट ईयर. And in this one we need provinces. The question is like total number of provinces, so we'll do provinces is equal to 0 इन प्रोविंसेस. तुम लोग मेरे को एक चीज़ बताओ यार, तुम लोग खाना खाते हुए स्ट्रीम देख रहे हो या खाना हो गया है तुम्हारा? आई वांट टू नो. तुम लोगों का खाना हो गया है? तुम लोग खाना खाओगे या तुम लोग भूखे ही सोने वाले हो? सेकेंड ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 14 जुलाई. हॉलीडेज एट होम राइट नाउ. इसको हम क्या क्या भेजते हैं यूजुअली? विजिटेड
it's connected, will send. It's connected is right now our graph. We haven't created any new graph out of this thing. We'll send visited, and what else we should send? We should send the city number. So in city, एंड इसको हम क्या करते हैं, सिटी ही लिखते हैं ना. सिटी लिखेंगे तो ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा यूजर्स के लिए भी. सिटी, एंड दिस इज ऑल्सो सिटी. ओके, सो सिटी, एंड डू आई हैव टू चेक इफ नॉट विजिटेड और विजिटेड. fuck it, I'll not check. And at the end, yeah, मच्छर भैंचो. Return provinces. Okay, and then uh, क्या क्या क्या, am I missing something? बस बैठ के बातचीत कर रहा हूँ. ओके, खाना तो कब का हो गया, 9:45 अराउंड. ओके, बैठ के बातचीत करते हुए सॉल्व कर सकते हो दोस्तों के साथ, टीटीसी. ओके, ट्रू. नहीं, कभी मेरे को कोड लिखते हुए फोकस टाइम चाहिए यार, मेरे को ऐसे होता नहीं. Public void DFS, and in this one we'll have like is connected this as it is. We will pass this graph. भैंचोद मच्छर इतने आ गए साला, परेशान कर रहे. And then city, in city, in city, and in this one family members not at home will eat late night currently doing RA's homework. Problem after that. भाई आजकल तो नींद भी याद नहीं रहती, याद दिलाना पड़ता है सोने के लिए, जैसे 10-9 hours awake. That's nice. That's nice. देन इसमें मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा कि visited this city will mark true. Okay, and again we'll need this for loop, I guess. For loop, city not provinces is connected, and city plus plus. इसके अंदर will check if city is not visited, then only do DFS, and it should be connected like this should be there. So is connected, is connected. कैसे पता चलेगा? ये सिटी नहीं है, ये मेरे ख्याल से नेबर का ये है ना. In graph, this the second loop inside the DFS is the neighbor. So this is neighbor, this is neighbor, visited city, and this is neighbor. So if the neighbor is visited, and how will know which? Okay, maybe city and uska neighbor, like this is visited. Let's try and run this. Okay, visited cannot find symbol. स्पेलिंग गलत हो गया क्या? VISITED, VISITED, VISITED. बैड ऑपरेंड फॉर बाइनरी ऑपरेटर. अच्छा, इक्वल टू 1. भाई मच्छोरे की माँ का भैंचो. फैमिली मेम्बर्स विल. ओके, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एक, अभी फ़िलहाल लड़ाई हुई है. उसके बाद से काफ़ी दिनों से टेक्स्ट नहीं आया, मीम वगैरह शेयर नहीं करा, तो दोस्त तो नहीं है कोई.
ग्राइंड में खुद का ही दोस्त बनना पड़ता है सी ब्रदर डूइंग लाइव इन फ्रंट ऑफ अस या ट्रू एफ या स्ट्रिंग्स अरेज पे लीड कोड क्यों करो या डीएसए पढ़ूँ या स्ट्रिंग्स अरेज पे लीड कोड करूँ या डीएसए पढ़ूँ स्टक एट स्टूपिड थिंग्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो भाई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो स्ट्रिंग्स अरेज पे लीड कोड करो या डीएसए पढ़ूँ पढ़ो मत डायरेक्ट शुरू हो जाओ जहाँ अटकोगे वहाँ पढ़ो जो अपने कॉलेजेस वगैरह है ना ये रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ टीचिंग देते हैं अपने को दे फर्स्ट डंप एवरीथिंग नॉलेज टू अस एंड एप्लीकेशन बताते ही नहीं कि कहाँ अप्लाई करना है दैट इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू स्टडी सो स्टडी इन सच अ मैनर दैट पहले प्रॉब्लम में फंसो एंड देन उसका सॉल्यूशन निकालो बिकॉज अपना माइंड उस तरीके से अच्छे से काम करता है स्टार्ट ऑन एनी क्वेश्चंस स्टक एट दैट क्वेश्चंस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड ओह मेरे को ये पढ़ना है देन यू स्टार्ट अगेन वो पढ़ो स्टैक ओवरफ्लो हो गया बहन चोद स्टैक ओवरफ्लो क्यों हो गया ये 0 1 2 मे बी दिस सिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 ओके दिस सिटी शुड स्टार्ट बट यार सिटी 1 से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन नो आई डोंट केयर कि तुम 1 से स्टार्ट करो या 2 से आई जस्ट केयर अबाउट द इंडेक्सेस श्योर यस मैं एंड कर रहा हूँ भाई पोल तुम लोग ज़्यादा ही बोरिंग बोरिंग बोल रहे हो एंड पोल लेट मी सी द रिजल्ट्स ए वेयर इज द रिजल्ट यस is this so yes boring 80% too boring 20% boring yeah Pareto principle nice मैं तो को पायलट से अप्रोच समझता हूँ लेक्चर भी लगातार लगातार नहीं आई एम नो मेरे को पता नहीं है कि तुम्हारी जनरेशन कैसे निकलेगी मतलब कैसे निकलेगी एज इन द अप्रोचेस यू विल हैव टुवर्ड्स सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इट विल बी टू different than the other generations. You will be the first AI, complete AI generation. So for you guys, जो normal problems थे आजकल मतलब whatever any basic problems, those basic problems are already solved because of the AI. So you have the most number of resources present. मतलब अब तक till the human life you are the first generation having the max number of resources max number of resources at hand so it's just देखना है फ्यूचर में कि तुम उस रिसोर्सेज से क्या करते हो will you guys change something or not शायद मंडे बहुत बोरिंग होता है मेरे को पता है मंडे सब लोग काम वाम करते हैं स्टैक ओवरफ्लो हो गया तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि इसको कैसे करें ट्राई रन यहाँ पे मैं जाता हूँ पेस्ट इट हियर ओके गेट द स्क्रीनशॉट कैप्चर कॉपी स्क्रीनशॉट copy image go to Excalidraw paste it here okay so I can do a try run alongside my code and I'll get this image and do यार मैं भी थक गया हूँ यार अभी मेरे को किक किया है कि दिन भर मैंने मेरे एक पीआर पे आज कितने कमेंट्स आए होंगे ऑलमोस्ट 200 पीआर कमेंट्स मैंने सॉल्व किए हैं भाई मेरा दिमाग ही पूरा ये हो गया है आज मैं अपने दोस्त की कंसिस्टेंसी दिखाऊं हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ प्लीज़ शेयर द शेयर द यूआरएल ब्रो so in this
दिस वन। और मैं अब भी बोलने वाला था कि ये थॉरफिन क्यों नहीं आ रहा है, पुरानी ऑडियंस क्यों नहीं आ रही, और लिखो खराब कोड ऐसे ही हो। यही मिस कर रहा था मैं। ऐसे ही। हाँ भाई हाँ। खराब कोड नहीं भाई, बहुत स्ट्रिक्ट। एक हमारे इसमें मेरे को भी ये नहीं पता था, व्हेन वंस आई जॉइन दिस कंपनी, आई वाज इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बट दिस प्रोडक्ट वर्क्स इन डिफरेंट वे, वॉट एवर। ऐसा मत बोलो भाई। इंग्लिश में बहुत ही गंदा ट्रांसलेट हो रहा है, पता नहीं कहाँ है मॉडरेटर। दिल्ली में घूम रहा था, उसके बाद पता नहीं दिल्ली जाके आके क्या हो गया। अप्रैल 4 को घर वापस आया, उसके बाद से चालू हो गया बंदा। ओके। डीसी पर भी एक्टिव नहीं है, हाँ पता नहीं क्या हो गया। विल पिंग हिम इन डीएम्स। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, मेरे प्रोडक्ट में क्या है ना कि देर इज नॉर्मली वी पुश कोड टू डेव। ओके, डेव पे हम डेव टेस्ट करते हैं, देन इट गोज टू स्टेजिंग और क्यूए एरिया। क्यूए पे वो क्यूए टेस्टर्स टेस्ट करते हैं, देन इट गोज टू यूएटी एरिया, जहाँ पे कुछ डिफाइंड एक्चुअल प्रोडक्शन यूजर्स को एक्सेस होता है, वो आके यूएटी टेस्टिंग करते हैं। अगर इस पर कुछ आता है तो विल अगेन कम टू डेव, देन क्यूए एंड देन गोज टू यूएटी, एंड देन फाइनली सब होने के बाद इट गोज टू prod. दिस इज हाउ इट इज। ओके, बट एंड prod में भी अगर नाउ दैट वी हैव अ प्रोडक्ट, ओके, वी हैव अ प्रोडक्ट, and it is has to be specific to a customer, and we have millions of customers, so same product copied to millions of customers. So customer 1, customer 2, customer 3, customer 4, ऐसे सेम प्रोडक्ट का कॉपी है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज है उनका, बट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब स्टेजेस ही नहीं है, क्यूए और यूएटी नहीं है। मैंने कोड कुछ पुश किया तो इट डायरेक्टली गोज टू द प्रोडक्शन and it hides behind a flag. Every feature hides behind a flag unless a flag is turned on using launch darkly. Launch darkly is another company. वो फ्लैग ऑन होने के बाद इस कस्टमर को दिखेगा, कोड वहीं पे है लेकिन कस्टमर को नहीं दिख रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी राइट कोड फॉर 2 hours एंड वी डू रिव्यूज फॉर लाइक 7 days. दिस इज आवर थिंग ओवर हियर. We cannot miss a single line of wrong thing, because अगर मैंने merge कर दिया, PR is merged, then it's going to deploy on prod, even though it's behind the flag, but it's on prod and कुछ भी हो सकता है. So that's why we review it very rigorously here. This is a different kind of a product approach. It is very specific when you have to uh, make a customer as a client and copy your product and क्या बोलते हैं उसको separate maintain करना है तो मॉडरेटर का पता नहीं यार, मैं उसको मैसेज करता हूँ। और भाई कैसे हो? अरे अंसारी आरिफ, आई एम गुड ब्रो, हाउ आर यू? Ansari, can you share your lead code profile, because the questions you solved, I'm guessing you must have solved around 200 300 questions on the lead code. I want to see, because the current profile I have of a subscriber, he's at 282, and maybe you are on top of that. क्यों भाई इस डुप्लीकेट फंक्शन होता है क्या? क्या क्यों भाई इस डुप्लीकेट फंक्शन होता है क्या? आस्किंग इन सी प्लस प्लस बना सकते हो, यू कैन डायरेक्ट प्रोडक्शन, यस। कंटेंट्स होता है आईजी सीपीपी में, याद नहीं सीपीपी कहाँ हो सकता है। इस डुप्लीकेट तो नहीं होता है उसमें, ऐसे बने बने हुए फंक्शंस तो नहीं होते सीपीपी में। मे बी तुम्हें कोई मॉडर्न लाइब्रेरी में मिले तो मिले, नहीं तो यू हैव टू मेक एवरी फंक्शन इन सी प्लस प्लस या डायरेक्ट प्रोडक्शन, वही तो। और ये मेरे को पता नहीं था, ये बहुत जगह पे यूज़ होता है डायरेक्ट प्रोडक्शन वाला सीन। मैंने मेरे दोस्तों को भी पूछा कि तुम्हारे यहाँ कैसे है। सो डिप्लॉयमेंट वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंगुलर का कैसा है ना, फ्रंट एंड लाइब्रेरीज, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, sometimes we miss on many things. It is not a pattern like the Java what we are learning. See, it has a very nice pattern. It has a class,
फंक्शन वगैरह सब अच्छे से लिखा हुआ है, इसके अंदर ही तुम्हें लिखना है, लेकिन वंस यू स्टार्ट टू राइट इन एंगुलर देर आर नो पैटर्न्स। लाइक जो नंबर एरे में रिपीट होता है वो प्रिंट नहीं करना है, ओनली यूनिक वैल्यू उसमें से बुल इज डुप्लीकेट करके आ रहे हैं। ना भाई, मैंने गिग्स फॉर गिग्स पे शुरू किया था, अभी लीड कोड पे स्विच हुआ हूँ एक दो महीने पहले। हमने भी एक दो महीने से चालू किया है। 65 क्वेश्चन करे हैं अभी लीड कोड पे, सो वी आर एट द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लीड कोड। ओके, बैक टू दिस ट्राई रनिंग नो। बह जा रहा हूँ आज मैं, शायद मेरा मन नहीं है आज सॉल्व करने का ज़्यादा। कल अच्छे हम अपन ने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए, कल मज़ा आया ग्राफ के क्वेश्चंस। ओके, bull visited, we mark this as visited true, and then what we'll do, province is 0, okay, because one is visited, province is plus plus will do, and city is connected, this is 0 1 and 2 for now. If I can mention, this is 0 1 and 2, not 1 2 and 3. uh, then in province 0 and city ग्राफ कर रहे हैं भाई अभी हम, थॉरफिन। DFS is connected, the passing visited this, and city is going to be 0 this. So city is true, 0 is true, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। city becomes true for neighbor is connected, length is 3 here, 0 1 2, length is 3, so less than 3, and this, so visited 0 is, it's false, and so this is true, and is connected, city is 3 and neighbor is 0। उल्टा हो गया शायद मेरे ख्याल से ये। city is 0 only, not 3, 0 comma 0 equal to 1, uh, then again DFS, अगर इस अगर ये 0 0 है तो मेरे ख्याल से रिटर्न करना चाहिए अपन ने, इस सिटी एंड दिस इक्वल टू 0, देन रिटर्न मे बी। इट्स कनेक्टेड 0 0 है तो मे बी रिटर्न डायरेक्टली, लेकिन ये अपने को क्यों आ रहा है, क्या बोल रही चैट। कंटेंट्स होता है आई गेस सीपीपी में, इस लाइक जो नंबर है मैंने पढ़ा ना भाई, मैंने गिग्स फॉर गिग्स ये भी पढ़ा, आई हैव 65 ये पढ़ा, हैश मैप्स यूज़ करो, डुप्लीकेट नंबर्स वाले क्वेश्चन मेरे, अच्छा अच्छा। ओके, सो मेरे ख्याल से दिस विल वर्क। नहीं, ये प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो एरर। Stack overflow error means, are we missing out on any condition? It's connected dot length city plus plus. Are we missing out on anything here, guys? Anybody in the chat?
कीज और इसका देख लेते क्या किया था, इज विजिटेड ट्रू, ये नहीं करना है अपने को। सो ये वाला पार्ट नहीं करना है मेरे ख्याल से। विजिटेड एनीवेज हम ट्रू कर रहे हैं वहाँ पे, तो ठीक है, ये लाइन नहीं चाहिए अपने को। length is connected dot length provinces DFS, which is true. क्या भाई, क्या है ये, क्यों नहीं हो रहा? Nobody is helping out here today. Why this error happens in Java usually? Why? What are the exact reasons? What are the exact reasons for this in Java? Deva. In Java, function happened because your program ran out of call stack memory, which is always caused by an infinite loop of recursion. Missing visited tracking. I'm tracking. I'm tracking is visitor. Should it be I minus 1? Nope. आउट ऑफ बाउंड नहीं है, इशू है, इट्स अ स्टैक ओवरफ्लो। और क्या रीज़न है भाई इसका? क्या बोल रहे हैं? लेट मी चार्ज माई लैपटॉप, चार्जिंग ख़त्म है। What guys are saying? uh, no bro, started hash map duplicate. Today I am doing lead code. आज लीड कोड कर रहा हूँ। अरे क्या नाम है, अंसारी इज कनेक्टेड डॉट लिंक। क्या इज कनेक्टेड सिटी डॉट लिंक? ओके, अच्छा, इज कनेक्टेड सिटी, हाँ अंदर का, लेकिन दोनों का लिंक सेम ही है वैसे देखा जाए तो। सिटी डॉट लिंक, दोनों का लिंक सेम ही है। और क्या बोल रहा है? अच्छा, देर इज is this your hairstyle or just you dry out your hairs and not set them? अरे यार I don't have any hairstyle bro, ऐसे ही होते हैं बाल मेरे।
I have silky hairs. रात को कौन बाल बना के बैठता है भाई? सिटी लेंथ और ये दोनों भी सेम ही है मेरे ख्याल से. व्हाट एल्स एम आई मिसिंग यहाँ पे? यूजुअली मैं पिन लगा के बैठता हूँ लेकिन आज नहीं लगाया मैंने. इज नॉट विजिटेड, इज कनेक्टेड, सिटी इज नॉट विजिटेड, नेबर. क्या है यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट? रिकर्जन कॉल में प्रॉब्लम है आई गेस. सिटी के प्लेस पर नहीं आ गया मे बी. यहाँ. ओ ओ ओके ओके ओके, ये फॉर लूप में ये आना चाहिए यहाँ. नेबर. ओके, दैट वाज द प्रॉब्लम. तो ये कंडीशन चाहिए कि अपने को इज कनेक्टेड 0 0 है तो रिटर्न एक्सपेक्टेड 2, आउटपुट 3 आया. उसके लिए वर्क. ओके, थॉरफिन का हेल्प किया. भाई बाल बिना सेट करे ज़्यादा कूल लगते हैं आजकल में भी. वो भी है. लेट्स uncomment दिस कंडीशन. हाउ many test cases is it solving? Only 5. We are very wrong then. So इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से. इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. Let's try run this. यही कर सकता हूँ ना मैं. तो in this one try run. Is anybody saying something? No. Okay. Circle num visited. We created this in province 0, city 0. So let me take the array as well where we are getting. So in this one we'll paste this. By visited also make by visited भी 2D array बनाओ, it will make more sense. या तो इज कनेक्टेड मैट्रिक्स की adjacency लिस्ट. ओके. नहीं, विजिटेड को हमने कीज वाले में नहीं बनाया था शायद. विजिटेड सिंगल ही थे. 2D बनाएंगे तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन. नो, आई डोंट थिंक 2D एड मैट्रिक्स बनाना इज अ सॉल्यूशन ओवर हियर.
मैं visited 2D array, it will make more sense. या तो is connected matrix का adjacency list बना लो. No, that hint I got from here. There is connected is the graph for us right now. Okay, इसको 2D array बना लेते हैं and size 3. Okay, and then in this one city. mm, हम ट्रू किसको करेंगे यहाँ फिर सिटी एंड नेबर तो वी हैव इट इनसाइड so we have to find send another element as well, so that will be city is this. let मैं क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर गया लग रहा है अभी. there are n cities, some of them are connected while some of them are not. If A is connected directly with city B and city B is connected directly with city C, then A is connected indirectly with city C. Province is a group of directly or indirectly connected cities, and no other cities outside of the group are given. Uh, if the ith city and jth city are directly connected and is connected equal to 0, otherwise return total number of provinces. If the ith city and jth city are directly connected and is connected I j is 0, city index. City index, but second also we need, no? It's a 2D, so what will be the 2D? City comma city, like this. Visited ij equal to true and DFS call में ij. Visited ij equal to true and ij. Arey, it's a I am solving this question because it is similar to this question that I solved just now, keys and rooms. And keys and rooms may we are using only one for loop inside and then we are iterating. So in this one there is, I don't think key, there is point, not even for this. Adjacency list बना है क्या इसका? I'm not sure if there is क्या ये, अगर अगर सिटी विजिट नहीं हुए हैं तब भी प्रोविजन को इंक्रीमेंट करो और डीएफएस चलाओ. प्रोविंस एनीवेज इंक्रीमेंट हो ही रहा है यहाँ से. ये मेरे ख्याल से ये नहीं सही है विजिटेड, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, आई एम सेइंग दैट बिकॉज कोई भी क्वेश्चन में 2D ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. 2D विजिटेड एरे, शायद मैं यहाँ पे ये कंडीशन में भूल रहा हूँ. सेम कंडीशन, इफ इज नॉट विजिटेड देन ओनली डू डीएफएस, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस आया हुआ है 3. मे बी वी आर प्रोविंसेस भी तब भी इंक्रीमेंट करूँ, इसके अंदर करूँ या बाहर? व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? इफ देर इज नो नेक्स्ट सिटी,
अगर सिटी विजिट नहीं हुआ है तब भी प्रोविजन को इंक्रीमेंट करो। आई एम नॉट श्योर, मे बी हम इसको भी अंदर ही करते हैं, मतलब अगर सिटी विजिट ही किया है तभी इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं किया है तभी करेंगे शायद। या इसको बाहर ही रखे, आई एम नॉट श्योर। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अगर सिटी विजिट नहीं हुई है तब भी प्रोविजन को इंक्रीमेंट करो, तब भी प्रोविजन। ओके ओके, लेट्स ट्राई। ओके इट वर्कड। नोट्स कीज एंड रूम्स में नोट्स गिवन था, इसमें नहीं है, उसमें एडजेसेंसी लिस्ट था। इसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ हाँ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और ये एडजेसेंसी लिस्ट, यस। बट समटाइम्स यू नो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस बिकॉज इट्स नथिंग बट वो लिस्ट है, एडजेसेंसी लिस्ट, और यहाँ पे ये 2D आ रहे हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे ज़रूरत है, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यू आर स्मार्ट ब्रो रविराज। 86% इट वर्कड। मेरे को फिर भी मिस्टेक नहीं समझा ये वाला। अ, अगर सिटी विजिट ही नहीं किया है, if city is not visited, then go inside, increase the provisions and do DFS. If visited, then do. Okay. Okay. See, Ansari, 2D array का मेरे को मतलब visited 2D array कभी लगा ही नहीं है, that's why I have backed from it कि 2D array नहीं लगेगा, क्योंकि अब तक इतने सारे 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कभी visited 2D array नहीं लगा है. So that is a pattern in graph. Running a for loop inside a DFS, that is a pattern. Making visited true inside this is a pattern. But यही है कि कौन सा कहाँ यूज़ करना है. Keys and इसमें there is uh, yeah, we are also doing this same. So yeah, ठीक है. दो ही क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट था, दो हो गए मेरे ख्याल से. लेट मी आस्क सिमिलर क्वेश्चन क्या है इसके लिए. रोबोट रिटर्न टू ओरिजिन, ये नहीं है मेरे पास, लिस्ट है इसका सिमिलर क्वेश्चंस का. लेट मी गो. तुम लोगों को पता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन क्या होगा इसका? 1971, 19841, 547 and number of connected components in undirected graph. This is the last problem in this particular type of pattern. इसको ओपन रखते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं. नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स. सैटरडे में मज़ा आ रहा था यार. अरे सब्सक्राइब टू अनलॉक, ये क्यों ऐसे? uh, in your solution, how are you detecting which nodes you have visited or not? Explain as visited 1D array and graph is adjacency matrix representation. Just explain how are you deciding visited nodes. To be honest, मेरे को clearly नहीं समझा जितना clearly keys and rooms समझा था. I just repeated the pattern this time. Let's do dry run अगर तुम बोल रहे हो तो. Okay, so let's do for this one. तो 1D array वाले से कर रहे हैं हम. ठीक है.
अरे हाँ ठीक है. अब now we are iterating on this each connect this वाला. So its length is 3 0 1 2 और ये 1 2 3 ये भूल जाओ, ये 0 है क्योंकि, और ये 1 और ये 2 क्योंकि उन्होंने 1 से सिटी लिया हुआ है और वो बहुत कंफ्यूजिंग है. बट अपने को कोई पॉइंट ही नहीं है 0 1 1 2 3 करने का, प्लस 1 करने का. सो द लेंथ इज 3. विल स्टार्ट सिटी 0. व्हाट आर यू सेइंग? सब्सक्रिप्शन लो तब अनलॉक होगा. अबे ये क्या है यार, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सब्सक्रिप्शन लो अभी. सिटी ज़ीरो इज़ कनेक्टेड लेंथ, लेंथ इज़ अपना 3 है यहाँ पे, ठीक है. एंड दिस इफ़ नॉट विजिटेड, अभी सब सब कुछ ये फॉल्स है यहाँ पे, तो इफ़ नॉट विजिटेड ट्रू आएगा. एंड देन प्रोवियंसेस विल बी 1 एंड वी विल बी एट दिस. अभी अभी यहाँ पे नहीं है. विल गो इन द डी एफ एस. द सिटी इज़ 0. ओके. देन वी आर इनसाइड दिस. विल मार्क. यहाँ पे मैं एक एम्प्टी बना के रखता हूँ, ठीक है. पहले फॉल्स है, तीनों ही फॉल्स है यहाँ पे, फॉल्स एंड देन फॉल्स. ओके, विजिटेड एरे अपना. एंड देन इन दिस वन वी आर मार्किंग दिस एज अ ट्रू, सो दिस बिकम्स ट्रू विच इज 0 1 एंड 2, ठीक है. एंड देन वी आर इनसाइड this is connected. So in this one we have to check the neighbor. So neighbor will start from 0, length is 3, and then this. Now is connected, we have to check, like is connected city, city is currently city is 0, and this is 0 and this is 0, so 0 0 1, so this is 1, true. And not visited, like city 0, so this is complete city I guess, that's why only one single 1D array पे काम हो रहा है. मैंने इसमें क्या किया था अपने कीज़ वाले में. हाँ, कीज़ वाले में भी ऐसे ही एक मेरे को डाउट आया था. ओके, बैक टू दिस. इज़ विजिटेड, लाइक व्हाट इज़ एनी नेबर का वैल्यू 0 है और 0 का वैल्यू क्या है, फिलहाल ट्रू है. सो इट बिकम्स फॉल्स. सो इट विल नॉट वर्क. इट विल नॉट वर्क. It should not work here. Okay, then we come to the second one. In this for loop, we come back to this for loop. Now city का value is 1. City is 1. So this one and this becomes 1. Okay, and is 1? No, it is not. So the provenance value will become plus 1 2. Okay, so the provenance is 2 right now. And then we come here, so city ka value is 1, so 1 becomes true, so this becomes true. Then we go inside this uh, नहीं, यहाँ पे हमने एक मिस कर लिया कि नहीं, दोनों के लिए वहाँ पे वैल्यू फॉल्स ही आएगा, तो कोई पॉइंट ही नहीं था आगे बाकी इस पे इटरेट करने का. सो इट जस्ट वेंट. नो बट जहाँ पे ज़ीरो आया है, ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो ज़ीरो ही होगा, सो नो पॉइंट इन दैट. Okay, so now back to this. City ka value is 1, 1 become this true, and then we'll start again. So city ka value is 1 and neighbor is 0. So 1 and 0 is 1 true, and it is currently true. Okay. Hmm. चलो, got a sleep. सुबह कर या नहीं यार, ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को भी ना. हम यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे. अगर हमने ट्रू कर लिया है तो डीएफएस कहाँ कैसे रन हो रहा है. True and false, it becomes false. False and true. False and true becomes false. So it won't go again inside this.
will go here, and then it will plus 1, so it will become 3. It's not going in, maybe that is the base condition. It becomes 3, so we come here, city ka value becomes 2 this time, so visited city 2 is false, so we go inside, it becomes true. So ये 3 आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 3 आ रहा है अपना, लेकिन 2 आ रहा है, सो हम ही गलत सोच रहे हैं शायद। ये जो एडजेसेंसी लिस्ट बना, ये विजिटेड 2D एरे बना लो, सेम साइज एज इज कनेक्टेड। Bro, this will never be 2D array, that's for sure, that's what I'm trying to say, because ये पैटर्न है ग्राफ के क्वेश्चन का, कोड का, आगे many such questions will come, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यू आर सेइंग दिस शुड बी 2D array, बट हम 2D array बनाएंगे इसको तो फिल कैसे करेंगे? वेट, अपना ड्राई रन गलत हो रहा है, ड्राई रन फिर से करते, या कैन आई आस्क चैट जीपीटी टू ड्राई रन दिस? कॉमा फॉरवर्ड, आगे आओ पता चलेगा। ओके ओके, हाँ आगे तो जाएंगे तब पता चलेगा ही। अभी क्या गलत कर रहे हैं हम ड्राई रन में, क्योंकि कोड तो सही है, कोड तो चल गया है, ड्राई रन गलत हो रहा है। मैंने पहले यही सोचा था कि इसको एडजेसेंसी लिस्ट बनाना, लेकिन इज दिस इज दैट काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विजिटेड 2D एरे अब तक नहीं लगा है, दैट्स व्हाई आई नेवर यूज्ड। ठीक है, so let me restart or try running this. The image you are referring to, तुम जिस इमेज का रेफरेंस ले रहे हो वो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है इस कनेक्टेड का, बट क्वेश्चन के इनपुट में एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है। सेम ही है। द इमेज यू आर रेफरेंस, तुम जिस इमेज का रेफरेंस ले रहे हो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है इस कनेक्टेड का, बट क्वेश्चन में इनपुट में एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है। तुमने सेम ही 3 बार पेस्ट किया है क्या? यू आर सेइंग क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, ऐसे एक लिस्ट बना लो, एंड देन लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लो, उसके अंदर ये ग्राफ, एंड देन add the each connected elements to this, like this. I'm not sure, I guess मैंने मंडे को लीड कोड नहीं करना चाहिए। Let me ask this, can you try run this code for me?
The logic in your code 100% correct. It is a standard solution for this because your logic is sound. The Stack Overflow on this is visited is not connected by an infinite loop. Instead, it is caused by reason 3. Too deep valid recursion. The LeetCode test case likely contains a massive deep linear graph. Here is exactly how your code executes using step-by-step dry run on a standard example. Just set the setup input data. Let's trace 3 into 3 matrix where city 0 is connected to city 1 and city 2 is isolated. City 0 is connected to city 0 1. City 1 is connected to 0 and 1, and city 2 is connected to 2. So visited false, false, provinces 0. Outer loop city 0 is not visited, true. Provinces increment to 1. Call DFS. Visited 0 becomes true. Yeah, loop through neighbors. Neighbor 0 is connected, is 1, but visited is true. Skip. Neighbor 1 is connected and is 0 is false. Visited true. हमने सबको ही skip कर दिया. Okay, I understood the problem. I understood the problem. Try run में इसका ये तुम बोल रहे हो एडजेसेंसी लिस्ट का ये दे रखा है, ऐसे नहीं है ये. We don't need adjacency matrix here, adjacency list here. ग्राफ में भी डालेंगे तब भी हम यही करेंगे उसको, rather than हम डायरेक्टली ऐसे कर रहे हैं कि सिटी these are the cities 0 1 2, वही हमने मैप किया है विजिटेड में. 3 सिटीज है तो तीनों का हमने ये किया है, क्योंकि इज 3 क्रॉस 3, ऐसा नहीं है ना, n क्रॉस n है वो. अगर ये n क्रॉस m होता तो अपने को लगता है एडजेसेंसी लिस्ट, तो हम मेंटेन नहीं कर पाते कि कौन सा किसका है क्या है वो नहीं पता चलता. लेकिन इट्स द सेम स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, सो अपने को कोई ज़रूरत नहीं है इसका. हम यहाँ पे सही भेज रहे थे. इट्स गोइंग सिटी 0, सो पहले सिटी 0 गया, इट्स विजिटेड फॉल्स, इट्स ट्रू, करंटली इट्स फॉल्स, सो इट बिकम्स ट्रू एंड प्रोविंसेस बिकम्स 1. सिटी बिकम्स 0 यहाँ पे, इट गोज हियर, सो विजिटेड दिस बिकम्स ट्रू, so this becomes true. And then inside this we are going, so we have to iterate on this. So city is currently 0 and neighbor is 0. Is it 1? Yes, true. And visited, like visited 1, it's false, so we skip this. Next, in the next one, the neighbor becomes 1, so 0 comma 1 it's 1, and visited becomes 1, so visited 1 is false, so not of false is true. So the DFS will run and neighbor is 1, so on this one the DFS will run. uh, so the neighbor is 1. 1 क्या है इसका वैल्यू अभी? uh, it will go inside this visited 1 and it becomes true, so this becomes true. Okay, so it becomes true, and then inside this city is 1 and 0, so 1 comma 0 is 1 true, and not visited 1 is false. So हमेशा पहले वाला skip ही होगा, next में जाएगा ये, and next में जाने के बाद is 1, so neighbor is again going 1, so it's true already, so this will not run. Okay, मेरे को समझ में आ गया अभी ये. I would love to see the another approach. I have only two approaches, either adjacency list representation of each connected or visited as 2D
matrix. I would love to see another approach. I have only two approaches. Either adjacency list representation of is connected or visited 2D matrix. Let's ask here ना. ये चार्ट चालू किया है. Uh, do we need to convert the each connected matrix to graph, adjacency list graph? No, you don't need to convert it. The input matrix is already adjacency matrix. हाँ, ग्राफ हम दो इसमें सॉल्व कर सकते हैं ना, अगर adjacency matrix हो या adjacency list हो. The input matrix is already an adjacency matrix representation of graph. Converting it to adjacency list takes extra time and memory without offering any major performance benefits. Why you should keep the matrix of one age lookups, checking if two cities are connected, no extra memory allocation, and then this. And why don't we have 2D visited array? We do not use 2D visited array because we are tracking visited cities nodes. तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या मेरा? हाँ. 2D array because we are tracking visited cities nodes, not visited grid cells. Because it's a 2D array, exactly n cross n. Here is the exact structural difference, nodes versus grid cells. What a 1D array tracks. 1D array visited city tracks whether a specific item city 0, city 1, city 2 has been fully explored. Yeah. What a 2D array tracks is used when you are navigating a physical map or maze like a grid where you move up down left right. हाँ, left down up down जो second type का problem है, this is the level 1 problem, the current problem. The level 2 problem जिस उस दिन हम जो solve कर रहे थे, direction go up left right, उसमें उसमें शायद ज़रूरत पड़ता है. उसमें हमने यूज़ भी किया है. कौन सा प्रॉब्लम था वो? नंबर ऑफ आइलैंड्स प्रॉब्लम था. नंबर ऑफ आइलैंड्स. नंबर ऑफ आइलैंड्स में हमने यूज़ किया है जहाँ पे अपने को अप राइट लेफ्ट राइट जाना पड़ता है. आज द सेकंड अप्रोच है. आई एम आस्किंग द सेकंड अप्रोच. सी 2D एरे ट्रैक. अब इस पॉइंट तक तो मेरे को ये समझ में आ गया है कि कहाँ क्या यूज़ होने वाला है, मतलब पैटर्न वाइज कि एक फॉर लूप लगने वाला है, विजिटेड एरे लगने वाला है, क्या नहीं. उसके अंदर ही अपने को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिगर आउट करना है. वो थोड़ा मुश्किल जा रहा है, बट दिस इज सो क्लियर बिकॉज आई हैव केप्ट. मैंने नोट्स बनाया हुआ है इन दोनों पैटर्न का. जो दो पैटर्न्स मैंने सॉल्व किए हैं, इट्स क्लियरली सेइंग 2D विजिटेड वाला भी नहीं लगेगा इसमें. द इनपुट मैट्रिक्स इज अ रिलेशनशिप मैप. The each connected matrix is not a physical maze, it is a table of representation. Does not mean a room at row 0 column 1. It means city 0 is connected to city 1. Redundancy and waste. If you create 2D array boolean visited, you would be tracking whether you check the connection between. तो वो हमें true इसके अंदर जाके करना पड़ेगा. जो मैं कंफ्यूज हो रहा था कहाँ ट्रू करना है. अगर विजिटेड हम बनाए भी 2D, तो इसके अंदर वो विजिटेड ट्रू करना पड़ेगा. मतलब विजिटेड सिटी एंड उसके अंदर का नेबर, उसको भी अपने को ट्रू करना पड़ेगा इसके अंदर. और बाहर अपने को पूरा ही सिटी सिटी इसका 0 1 2 3 0 1 2 3 सबको अपने को ट्रू करना पड़ेगा. Yeah, I asked the second approach as well, bro. You're right कि वो यूज करना पड़ता है. वो आगे वाले क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं सारे उस दिन जो
नंबर ऑफ आइलैंड, और क्या था, नंबर ऑफ एनक्लेव्स भी सेम ही था शायद। हाँ, इसमें भी विजिटेड एरे 2D ही यूज़ किया हुआ है हमने। और क्या था, नंबर ऑफ एनक्लेव्स, और क्या सॉल्व किया था हमने, लेट्स सी प्रोफाइल में क्या क्या सॉल्व किया था। कीज एंड रूम, फाइंड द सेंटर कीज एंड रूम, नंबर ऑफ एनक्लेव्स, फ्लड, हाँ फ्लड फिल इज द वन जो जिसमें लेफ्ट राइट वाला अप्रोच था। यहाँ से चालू हुआ, लेफ्ट राइट वाला अप्रोच का शुरुआत यहाँ से था, तो यहाँ पे वी हैव यूज्ड, वी डिडंट यूज द विजिटेड सराउंडेड रीजन्स। हाँ, इट्स लाइक आइलैंड वाला प्रॉब्लम, तो इसमें यूज़ किया है क्या, यस इसमें भी वही यूज़ किया हुआ है, सराउंडेड वाले प्रॉब्लम्स जो सेकंड लेवल के हैं ना। देर आर लाइक 6-7 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने पहले फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम्स आई हैव, so the first type of problem is like simple DFS with adjacency list or matrix, with adjacency list or matrix same. And second type of problem is like DFS plus all directions, ऑल डायरेक्शन वाला। इसमें इसमें लगता है अपने को 2D विजिटेड, इसमें सिंगल ही लगता है विजिटेड। दोनों में DFS है, दोनों में रिकर्जन रिकर्जन चलेगा, लेकिन इसका रिकर्जन विदाउट फॉर लूप वाला जो मैंने फिगर, मतलब अपना वाला मैंने जो अप्रोच बना के रखा है, इसमें अप डाउन लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, इसमें सब में DFS चलेगा। सो दिस इज़ द पैटर्न दैट आई एम फॉलोइंग हियर। एंड अगर मार्क करना है विजिटेड, तो इसके अंदर विजिटेड हम मार्क करेंगे, इसके अंदर नहीं। हेलो तेजस ब्रो, हाउ आर यू? सो ये आगे का तो प्रॉब्लम हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, दैट इज़ द लास्ट प्रॉब्लम लेफ्ट इन दिस अप्रोच। कहाँ गया वो स्क्रीन, कौन सा था प्रॉब्लम यार, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। मे बी तुम आगे पीछे होने की वजह से कंफ्यूज हो गया, आगे के बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लिए। यार ये तो सब्सक्राइब करने बोल रहा है, ये मैंने अब तक नहीं किया हुआ है। बाप रे, $35 पर मंथ, $35 पर मंथ तो टू मच है यार। ओह शिट, आई एम स्लीपी नाउ। हेलो तेजस ब्रो, गाइस लाइक कर देना यार, आज मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आई गेस इट्स इनफ। 3 एक्चुअली, स्टार ग्राफ का भी एक छोटा सा अप्रोच ट्राई किया था। कहाँ गया वो स्टार ग्राफ का अप्रोच? दिस वन 547, 540। अभी तो मैं, नींद आ रही है यार मेरे को, कल ऑफिस भी जाना है। यही तो सॉल्व किया हमने, 547 ही तो सॉल्व किया। आंसर यार हमने 547 ही किया है। ओह बाप रे बाप, कहाँ है सब्सक्राइब? कोई ऑप्शन है क्या तुम लोगों को पता है इसका, कुछ क्रैक हैक एनीथिंग, या स्टूडेंट डिस्काउंट? $159, और डॉलर्स भी तो जुदा हुआ है पूरा, $100 इन इंडियन रुपीज। 15,000, बाप रे, फोन आ जाएगा इतने में यार। सारे ही क्वेश्चंस लॉक दिख रहे हैं मेरे को आगे के, तो मस्त धंधा है ये इनका। उफ, हाउ कैन आई अनलॉक लीट कोड प्रीमियम फॉर फ्री?
हाउ टू गेट लीड कोड प्रीमियम। क्या लिखा है गिटअप पे, सेम क्वेश्चंस मिल जाएगा शायद, सॉल्व सेम पेड क्वेश्चन दूसरे प्लेटफॉर्म पे सर्च करके सॉल्व कर लो, वो मज़ा नहीं आएगा। आई कैन आस्क, किसी का है तो। हेलो LeetCode community, I heard that there is a trick on getting LeetCode premium for free using VS Code cache cookies. Has anyone tried this hack? Your input would be okay. Out of all organizations out there, I'm more than happy to give them the premium fee. Their business model is opposite of predatory, which is just refreshing these days. For people not born in developed countries, the pricing is rather steep. Yeah, 15,000 बहुत ज़्यादा है. I need LeetCode Premium for the Google specific interview questions. This will be helpful for you. LeetCode questions company wise. Solve the same paid questions. Nahi. I'll figure out some way to solve these questions then. I'm new to LeetCode. I was trying to find a way to see student discount कुछ होगा. You saved me 100. Oh, okay. There is a YouTube video for this. सो इस वीडियो के एंड में आप ठीक है, तो बेसिकली लीड कोड की वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं और मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ कि ये कोई मॉड या कोई हैक ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और इसमें वैसा कोई सिस्टम भी नहीं कि आपने कार्ड्स परचेज़ किया 1 मंथ का मेंबरशिप, फिर क्रेडिट कार्ड नंबर दो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है ना कि आपके लैपटॉप में डैम श्योर हो कि आपके लैपटॉप मंडे है ना, मंडे सैटरडे के दिन बहुत मज़ा आया था, स्ट्रीम लाइक 2 AM इन द मॉर्निंग, बट आज पॉसिबल नहीं होगा, दिन भर काम कर रहा हूँ। इट वॉज ग्रेट डिस्कशन, या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, बट या इट वॉज अ गुड। इस वाले पार्ट में ना देर आर क्लियरली पैटर्न्स ना, देर आर क्लियरली पैटर्न्स, बट मैं इसका अच्छे से नोट्स लिख रहा हूँ। आई विल आल्सो शेयर। देर आर 7 और 8 पैटर्न्स की क्वेश्चंस है ग्राफ में पूरे। सर्च करना है लीड कोड, ठीक है। तो ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा, लीड के बाद स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है, वरना वो ऑप्शन नहीं आएंगे। आपको सिंपल पहला एक्सटेंशन इंस्टॉल किया आप, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपको ना, मेरे में तो पहले से ऑप्शन आ गया, इससे मैं लॉगआउट मारता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, लीड कोड कुकी एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हमें इसके थ्रू लॉगिन करना है। इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस कुछ नहीं है, आपको सिंपल लीड कोड के होम पेज पे आना है। सबसे पहला स्टेप लीड कोड के होम पेज पे आना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना। अब ये मत सोचना कि मैं इसको इंस्पेक्ट करके प्रीमियम कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप देखो, समझ में आएगा। और फिर प्रैंक पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे क्लिक करते आपको रिफ़्रेश करना है पेज को। रिफ़्रेश करते ही ना आपको इसमें होम स्लैश का ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको आते ही देखिए, आपको क्या करना है, कुकी वाला पार्ट है ना, इस कुकी वाले पार्ट को आपको कॉपी करना है, नहीं करना आपको। समझा मैं। ओके, जो सेशन कुकी है वो यूज़ कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, बट वो सेशन कुकी में तो अपना सेशन ओ प्रीमियम वाले वो आपके इसमें आ गए हैं। आप बिंदास डेली क्वेश्चन सॉल्व करो मस्त। और अनुराग सर की बात सुनते रहो, डी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन भी आ गए, इजी, मीडियम, हार्ड। जैसे एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन, दिस इज अ हैक ब्रो। कितना बिंदास सॉल्व करो इसे। होप यूट्यूब मेरा वीडियो बैन ना कर दे ये सब ट्रिक्स देखने के लिए। या थैंक्स फॉर दिस शॉर्ट सेशन। आज ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन ठीक है, चलो, विल मीट यू अगेन। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।